company. It has got a lot of expertise in the field. It won by a fair tender. But sir, your government's your key thrust has been that promoting private sector participation in space. So now again we have just HAL, which has a long history of course, but again it is a PSU that is going to do something, and this goes back to our old tradition. So isn't this a bit of a step back from what you have kind of championed? No, to take your second question first, though it's the conference doesn't deal with space. Actually, we need to also have a very robust, developed private sector. I agree with you to an extent, but the point is that we need to have private sector also developed with an equal pace to be a very active participant in the collaboration. So somewhere that gap is missing, possibly again because the policy earlier was not very favorably inclined to the private sector. It's only after Prime Minister Modi came in that started happening. Now, for example, we have opened up space to the private sector only in the last 4-5 years. So their capacity building has also started just now. Had it happened earlier, maybe they have. So we have lot many projects, I think, under Prime Minister Modi's government. So many projects, both in infrastructure and otherwise, have been rolled out. But we don't have the sufficient private sector acumen. You have 1 or 2 companies everywhere, you keep looking for that. So I think this is take time, because now there's a shift in the policy. Same is the case in nuclear sector also. Now that we have just announced this year, we'll come out with the rules. And then when the private sector understands that they are now expected to collaborate at a larger scale, they would also start building capacity for themselves. What did he say? I think I would agree with you that one of the measure of success is an IPO in the market. But the second measure of success is also the equity valuation that actually companies have garnered over a period of time. And I'm sure you would appreciate that the biotech companies do take long time of incubation periods to be able to do these activities. And as I showed in my slide, more than 7,000 crores have been raised by the BIRAC companies, and these are outside, not companies outside I'm talking about, because there are not all of them are governed by BIRAC actually. Have in fact have raised more than 7,000 crores of equity in various mechanisms. In fact, one of the companies that you might have just read about raised about 1,300 crores actually for sugar alternative measurements actually in Telangana based company. So there are several companies, that was just announced about a couple of days back. Actually. No, I think the same what applies in case of space. It's good that your observation is quite appreciable. It's also way here. We've just now started opening up, without any inhibition or reservation to the private sector. But the private sector was not as prepared for this outreach by us. They never expected us to. So now, for example, when they came out with the first ever vaccine, DNA vaccine, which was all the trials were done in this Faridabad institute, you hardly have 1 or 2 companies who would come forward to manufacture it. That's the point. Had we given them a signal about maybe 2 decades earlier, that this is the direction that we are going to take, they might have had. So we'd hardly have choice. They have come out with the first ever indigenous antibiotic. Again, credit to them. I didn't mention it because I was talking only of the global practices. But for the first time, we have an antibiotic. The salt was developed here, trial was done here, and the manufacturing also. And it's called nephromycin, said to be very effective in, particularly in resistant respiratory infections. Earlier on, all the salts came from outside. Again, we didn't have a company to come forward. They came across a company, of course, Mumbai-based, but to be very honest, they were not doing very well in the market, so they came forward to take this. So I think in course of time, and I'm sure that would happen because they have their own business stakes, and when they realize that they have opportunity, they would also come up to that level. 135 at the back. Will come one by one to everybody. Now they have come out with a host of vaccines. They have come out with a vaccine on HPV virus. Again, 1 or 2 companies. One, that South Indian company took the DNA vaccine. Now Pune company is taking the HPV. Soon they'll have a malaria vaccine.
They are working on tuberculosis. You don't have the private parties actually to lap up what they have. They are offering. But I'm sure this will happen in course of time, sooner than later. सर, मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं TV9 भारतवर्ष से हूँ। मंत्री जी से मेरा सवाल है, सर, विभिन्न क्षेत्रों में मौसम के अलावा भी पूर्वानुमान संभव किया गया है। क्या भूकंप को लेकर के पूर्वानुमान लगाए जाने को लेकर कोई काम चल रहा है और इस दिशा में क्या कोई संभावना बनती है? नहीं, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। वैसे देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी भूकंप को लेकर के कोई बहुत अधिक सक्षम कोई इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे उसकी भविष्यवाणी की जा सके। लेकिन हाँ, भूकंप हो जाने के बाद डैमेज असेसमेंट या जो नुकसान हुआ उसके लिए हमारे पास बड़ा एक सक्षम व्यवस्था है और उसको लेकर के अब बहुत सारे यूनिट्स हमारे स्थापित भी किए गए हैं। डॉक्टर रवि, यू लाइक टू ऐड टू दैट? As of now, there is no science to predict earthquake. But however, we are trying to do that earthquake. Suppose early earthquake warning. What we mean is, from the primary wave, if you have more observations from the primary wave, before coming the secondary wave when it comes, suppose that is a major disaster things. So we will be able to get a few seconds before. But that also you can add that in the last few years you have set up a host of observatories across the country. So from north to south. So that's a more number of observations required. In Delhi itself, more than few, what is called more than 30, 40. So we will be able to tell you is better than other places. But we are aiming to go for. It is not only India, globally. We are trying to go for early earthquake warning prediction, maybe in the coming decades. कभी मतलब ये ना समझिएगा कि पीयूष जी, अर्लियर का मतलब ये नहीं है कि होने से पहले जब शुरू हो जाए थरथराहट तो आपको वार करना कि बिल्डिंग से बाहर निकलो। Before secondary wave, damaging wave. हाँ, मतलब इससे पहले के नुकसान हो आपको अर्ली वो करना। ये नहीं है जैसे आपने पूछा कि एक रात पहले बता देंगे कि आज रात को बाहर सोइएगा। It should not get misinterpreted because honestly speaking, across the world there is so far no scientific methodology developed to predict it as such. 245. दूसरा माइक दे दें। सर, मैं डॉक्टर मीना कुमारी, राजस्थान पत्रिका से। सर, मेरा सवाल था कि जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इस टाइम में सबसे चैलेंजिंग जो विषय है वो जलवायु परिवर्तन है, जिसमें कि एक ये होता है कि पूर्वानुमान की बात करें तो ये आता है कि बारिश 4-5 दिन के बाद में बारिश होगी और इस टाइम सूखा होगा, इस तरह की तो हमें बताया जाता है। लेकिन सडनली इस टाइम में जो देखें कि सडनली बारिश होती है कम टाइम में और एकदम बारिश होती है, तो इस तरह का अभी तक कोई पूर्वानुमान का बारे में कम ही जानकारी मिलती है। दूसरा मेरा एक ये जानना चाह रही थी सर कि जैसे मौसम विभाग इस टाइम की बात करें कि वो 5-10 या 15 दिन पहले भी बता देता है कि इस टाइम में बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, लेकिन वहीं देशज ज्ञान की बात करें तो देश भर में चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी, यदि वहाँ के किसी गृहिणी से भी बात करें, किसान से बात करें, तो वो अगले 6 महीने की भी बता देता था कि अगले जो इस टाइम में बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, कैसे सूखा होगा, तो वो अपनी तैयारियां कर लेते थे। तो क्या जो देशज ज्ञान है उस पर भी किसी तरह का अभी तक कोई साइंटिफिक कोई स्टडी हुई है या फिर आगे होने के लिए भी इस पर कोई विचार है? ओके, नहीं ऐसा नहीं है। पहले की तुलना में अगर आप देखिए हाउ डू यू अप्रिशिएट व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन यू कंपेयर इट। तो एक जमाना था जब टेलीविजन नहीं था तो पत्रकार भी अब नई पीढ़ी के बैठे, पुराने पत्रकारों में ये बड़ा लतीफ़ा मशहूर हुआ करता था। तो सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे मौसम का हाल बोला जाता था रेडियो से। अब वो उनके ऊपर लाजिम होता था, अनिवार्य था। तो वहाँ जो अनाउंसर बैठी होती थी, अब उनके पास डिपार्टमेंट वॉज वेरी
प्रिमिटिव मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से सूचना आती थी, कभी पहुंचती थी कभी नहीं पहुंचती थी। लेकिन ये तो आप आज की चैनलों की तरह है नहीं कि कभी भी ब्रेकिंग कर दो। तो वहाँ एक निर्धारित समय होता था, सुबह 9 बजे आकाशवाणी ने बोला। तो वो एक उन्होंने तकिया कलाम रखा था कि अगले 24 घंटे में दूर दूर तक बारिश होगी, वैसे आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। यानी हो भी जाए तो गलत ना हो। लेकिन अभी उसकी तुलना में 3 तरह के मैकेनिज्म इन प्लेस है। नहीं, मैं आप पहले आप उसके बाद आप बताइएगा। एक लॉन्ग रेंज जिसमें 1 हफ्ते की करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे। एक शॉर्ट रेंज है, वो भी है। और जो आप कह रही हैं नाउ, एक नया शुरू की गई है प्रक्रिया जिसमें 3 घंटे की भविष्यवाणी की जाती है। अभी दिल्ली में इतना सक्षम नहीं हुआ, लेकिन जो हैवी मानसून जोन्स हैं मुंबई चेन्नई में, बल्कि अब मुंबई में तो ये हालत हो गई है कि घड़ी देख करके व्यक्ति बताता है कि छतरी लेके जाना है, बाहर के नहीं जाना, या रुक जाता है कि साहब इतने बजे तक बारिश रुक जाएगी, उसके बाद जाएगी। मैं तो इनसे कह रहा था कि हम जिंगल प्रिपेयर करें टू एडवर्टाइज दैट। गृहिणी आके पूछती है कि आप छतरी ले जाइए, तो कहता नहीं भाग्यवान रुको, आधे घंटे बाद जाऊंगा। तो जस्ट टू मेक पीपल अवेयर, क्योंकि जो आप कह रही हैं, आपका कहना ठीक है, जागरूकता की कमी है, लोगों को पता नहीं है। किसानों के लिए डेडिकेटेड हमारे पास व्हाट्सएप्स हैं, मेघदूत व्हाट्सएप, मौसम व्हाट्सएप, अनफॉर्चुनेटली कोई देखता नहीं है, सब कुछ इसमें है, ऐप्स है। तो उसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा। नहीं, किसान की तैयारी के लिए है ना, आप अभी देखिए, शायद आपने भी नहीं देखा हुआ, डेडिकेटेड ऐप्स फॉर किसान है। रवि विल फर्दर एलैबोरेट। मेघदूत ऐप अलग है, मौसम ऐप अलग, 3-4 ऐप्स है। उसमें यह भी बताया जाता है कि आपकी बुहाई कब करनी है, कब कटाई का सीजन होगा। और इफ़ यू क्रिएट एन इकोसिस्टम, उसके साथ सॉयल हेल्थ कार्ड भी जोड़ दें और सैटेलाइट इमेजेस भी जोड़ दें, तो आपको ये भी समझ आएगा कि कौन सा क्रॉप किस मिट्टी में कब लगाना है। लेकिन हो क्या रहा है कि वही मैंने कहा कि इसके बारे में जानकारी कम है, और जानकारी नहीं है इसकी भी जानकारी नहीं है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, देयर आर 2 सेट्स ऑफ पीपल, वन हु डोंट नो बट दे नो दैट दे हैव टू फाइंड आउट, अदर्स हु डोंट नो दैट दे डोंट नो। तो देयर इज अ सेकंड सेट ऑफ पीपल हु डोंट नो दैट दे डोंट नो, उनको ये भी नहीं मालूम कि इसकी जानकारी कहीं है। तो हम, आपका कहना ठीक है, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू इम्प्रूव ऑन, एंड इन फैक्ट आई हैव बीन इंसिस्टिंग। डॉक्टर महापात्रा इज ऑल्सो देयर, ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। इसका प्रचार प्रसार हमें और अधिक करना होगा। बाकी जहाँ तक दिल्ली राजधानी क्षेत्र का ताल्लुक है, यहाँ पर ऑटोमेटेड स्टेशंस दूसरे नए लगाने की प्रक्रिया जारी है। बिकॉज जब हम बात करते हैं कि साहब दिल्ली में प्रेडिक्शन कम हुई फोरकास्ट की, तो हम ये भूल जाते हैं कि आज का दिल्ली 25 साल पहले का दिल्ली नहीं है। अब हम सारे एनसीआर को दिल्ली कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पर बैठकर प्रेडिक्शन करेंगे तो शायद नोएडा के लिए इतनी रेलिवेंट ना रहे। सो वी नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ दोज व्हाट इज कॉल्ड AMT, ऑटोमेटेड मेट्रो स्टेशंस। डॉक्टर महापात्रा को भी दे दो थोड़ा माइक, सो दैट इट कम्स फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ एंड गोज स्ट्रेट टू राजस्थान पत्रिका। महापात्रा जी सुनाओ इनको थोड़ा हिंदी। थैंक यू सर। यस, एज मिनिस्टर साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे ही चुनौतियां हैं जो कि टाइम पर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज हो कि अर्बनाइजेशन हो। इसको देखकर मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स साइंसेस इंडिया मेट्रो डिपार्टमेंट में लगातार कंटिन्यूसली एनहांस कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स, और इसके साथ साथ मॉडलिंग सिस्टम भी। जैसे कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने 6 किलोमीटर रिजोल्यूशन वाले मॉडल को भी इनाग्रेशन किए थे। और दिल्ली की बात करें तो लगभग 100 ऑटोमेटेड स्टेशन लगाए जा रहे हैं और 3 रडार भी लगाए जा रहे हैं, जो कि दिल्ली और NCR एरिया को कवर करेगा। ऑलरेडी हमारे पास 3 रडार थे। तो इसमें जो दिल्ली का हाई रिजोल्यूशन ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन जनरेट करना, डिटेक्ट करना और प्रेरित करने के लिए मदद मिलेगा। किसानों के लिए थोड़ा सा बताएं ना आपको। किसानों के लिए हमारा एक जो कोशिश है कि हर किसान के पास हम कैसे पहुंच सकें, इसमें मोबाइल ऐप मेघदूत डेवलप हुआ है। इसके अलावा SMS भी है। इसके साथ SMS जा रहे हैं हर किसानों को, और हर विलेज में एटलीस्ट 5 किसानों को हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। लाख्स ऑफ विलेजेस में हम भी पहुंच चुका है, सभी विलेज में पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ स्टेट का जो लोकल मोबाइल ऐप है, इसमें भी किसानों का इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, DD किसान में जा रहे हैं, मास मीडिया में इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे बहुत सारे मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि हर किसानों के साथ हम जोड़ सकें। हम आप सभी से यही अनुरोध करेंगे कि हमारे जो सभी मोबाइल ऐप आए हैं, इसको
आप यूटिलाइज करिए, वो लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश करिए। इम्प्रूवमेंट होने वाली है उसमें डॉक्टर रविचंद्रन भी बताएंगे फर्दर अपग्रेडेशन का जो काम। No, as you know that this heavy rains predictability is very hard. It is only peculiar to tropics. That is why under the mission Mausam we are planning to go for more number of observations, especially radars. So we are planning to have hundreds of radars all over India. ये जो आपका सवाल था उससे ये जुड़ता है। So once we get the heavy हो जाए, once we get the radars in place in a year or so, we will be able to monitor all the weather systems without fail, because the cloud burst and other things we are not able to monitor as of now. So once the radar is in place, definitely we will be able to provide the nowcast as well as the forecast better. थैंक यू। अभी 248 है, इस वाले फ्लैंक से भी एक लेते हैं, फिर हम आएंगे आप लोगों के पास आएंगे। ये जो आप सवाल पूछ रही थी, क्लाउड बर्स्ट में उसकी रेलेवेंस होती है क्योंकि वो वहाँ पर कंडीशंस के ऊपर आधारित होता है, लेकिन ये जो सोफिस्टिकेटेड रडार मिशन मौसम से बात कर रहे हैं उससे दैट विल आल्सो बी टेकन केयर ऑफ। इस सामने है, हाँ बताएं। Sir, this is Kalyan from Deccan Herald. Sir, here. I just wanted to know, is there any plan to revise the scholarship amount for SRF and JRF? I think sometimes back we are told that this will be kind of periodic review of the amount of money they get under SRF and JRF schemes. So any plan to revise those amounts? Abhay has all the purse strings. No, I think no. Currently, are you there is increasing? no such plan currently. Yeah, but No, don't close the window. no. We are not closing. Actually, we are doing consultations with नहीं, the आपका सुझाव stakeholders. ठीक है, उसमें समय के साथ साथ जैसे फाइनेंस वालों के साथ इनके चर्चा चल रही है, मशवरा परामर्श कि किस तरह से होगा। He says anything immediate, you mean not very immediate. 234। Thank you. I am Srishti Chaudhary from CNN News 18. My first question is to Dr. Abhay. DST has a lot of programs to bring the Indian diaspora scientists to collaborate and come back. How have those schemes been faring? How successful have we been? And second question to Dr. Singh, again regarding Axiom Mission 4. So we had a lot of experiments which were shortlisted from various labs across the country. Considering that the mission is getting really postponed, how are we really ensuring that they remain viable? Like, what's the plan like to for those experiments? Thank you. So, regarding the Indian diaspora to bring back, actually, we had launched a Vaibhav Fellowship program that was launched, 2 years back, and under that program, we have done 2 calls. So last year, and these are like collaborative projects. So we invite the proposals from the Indian diaspora, which are located across any institutions abroad and who want to spend some time here and collaborate with the Indian scientists. So last year we had launched this program in 2023. Once we launched in 2024, a total of let me just check. I think total of about 40 Vaibhav fellowships we have so far offered. This year again, I now request Dr. M. Ravichandran, Secretary, Ministry of Earth Sciences, for his presentation. Respected Minister and PSA Saab, my fellow secretaries, Sri Osaji, colleagues from DST, DBT, CSIR and MOES and press and media. Very good morning to all of you. I'll be presenting briefly about 5-6 minutes what are the for the Indian diaspora, but inviting any scientists from abroad and spend time. Now that program, I think
has supported more than 100 such Vajra fellows, in the last few years. Of course, now with the Anusandhan National Research Foundations, we will be restructuring that program. I think you are also working on further incentivizing options. Yes. So that also, to add to you, I mean, which may not be right to, or not be in a position to actually share now, but they are still working on some more incentivizing options as well. But I think it also requires to be now, at least at the personal level, whoever is going abroad, I ask them to plan out when they are coming back. So once a person has stayed there for 10, 15 years, raised a family, then in spite of all the incentivization given by the department, they are held back for other reasons, for the social reasons. The family comes, like for example, we had the case of an individual whom we had actually facilitated a few years ago, but when he wanted actually to shift, his family declined. And then he confessed to me. I said, no, I now understand. My children have never been to India. In fact, even for the holiday, they went some European destination. So most of those who go there for in capacity building should also be advised to devise a roadmap, also a timetable to come back, because the other factors take over. Now, as far as the XEM4 is concerned, of course, the experiments are in place. I don't think we have to be apprehensive. It's only the final launch date because the safety concerns, the other concerns, but we have, and it's very heartening that all the 4 astronauts have very good comradeship amongst themselves. The commander, Peggy, is a veteran, 65-year-old astronaut, and she commands the respect of all the other 3. And they all look up to her as a, very motivating seniors. So there's absolute understanding amongst all of them. 214 पूछिए, अपना परिचय भी दे दीजिए। मंत्री जी, मैं प्रदीप कुमार, हंस इंडियन न्यूज़पेपर से। हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाउ इट विल बी रनिंग हाइड्रोजन फ्यूल। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव। हाउ डज इट पॉसिबल टू रन ए vehicle